Hello, 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 hello everyone. Hello, hello Bhargav, Neha, Anupam, Varsha, Jeevan, Supriya, Rocky, Dinesh, Vinay. Good evening. A very good evening, everyone. Glad to see you again. Good evening. How are you guys? How are you? Please let me know. Sir, I want to do startup for Oracle database, but it is exciting with error. Could you please help me? Yes, Nikhil, why not? बढ़िया सब लोग बढ़िया फाइन ओके ओके आई एम ऑल्सो फाइन एंड तुम लोगों के साथ मिलके और भी अच्छा लग रहा है मुझे थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ओके ओके सो एज यू नो गाइस today is the last class of our boot camp okay after completing this session you will receive a certificate of this boot camp okay okay are you excited guys तरुण पटेल फिर से सब लोग पूछो कि अटेंडेंस लिंक कब मिलेगा हाँ पता था मुझे anyone can answer give all member certificate give only old member Uday who attended three classes only they can claim the certificate or any of two classes okay okay so let's start it without wasting any time excited for certificate so are you not excited for class Jivan only excited for certificate very good Jaising Nobita X this is my first class okay Monica no problem you can watch this class okay where you have to download the certificate you will get via email okay let me share my screen excited to learn very good okay I hope my screen is visible to everyone
This is my second class. No problem, farmer. You will receive the certificate. There also give the theoretical explanation of this topic. How many days this full course? Today is the last class, music. Okay, let's continue. Let me open my folder, my project folder, where we have done our projects. Here, this folder. Okay, can you tell me what we have learned the previous day? हमने पिछले दिन क्या सीखे थे हम लोग? What we have learned at the previous day? Can anybody tell me? क्या सीखे थे हम लोग? Yes, Vishaka, it's third and the last class. Last but not the least. Database. Proof to read, update, SQL, alchemy, good function. Very good. अच्छा लगा तुम सबको याद है देख के. मुझे तो याद भी नहीं रहता था. ओके, वेरी गुड. वेरी गुड. सबका मेमोरी कितना स्ट्रांग है. यू हैव वेरी स्ट्रांग मेमोरी गाइस. ओके, वेरी गुड. Okay, should I recap the previous class topic or should I start with a new topic? Okay, so today we will learn new topic. Okay, Mahi. Today we will learn about session. Okay, recall all. Okay, okay, okay. Start with new topic. What the new deploying project? Okay, yes, yes, I know everything. Today we are gonna learn about session and make a mini project with session, and we have learned about database, right guys? Yesterday, no, sorry, the day before yesterday, means the previous day, we have learned about database. Okay, how to store value in database and how to uh, retrieve the data from database, right? We use our SQL alchemy as our database. Okay, but in this today's topic, we are gonna learn a new thing. Okay, we use Excel. We are going to use Excel as our database. Okay, this will be our project and deploy the project into render. Okay, how to deploy the project in render free and learn about session. Okay, recall one Kushi Manchadani. आयुष प्रजापति, हेलो. राधे राधे हेमा. Okay, recall all topic. Okay, just I take just 15 minutes to recall all the topics, then we start the new topic. Okay, not 15 minutes, just 5 to 10 minutes. Okay, so from the first day we have learned about Flask. Okay, how to install Flask module with pip install Flask, and how to create a Flask app. Okay, then how to define a route. Okay, does anybody has any confusion regarding previous classes? Then you can ask me. Okay, white devil. Okay, अगर किसी का कोई भी समझता रहा तो मुझे पूछ सकते हो. Okay, you can ask me any of your problem. Okay, your Flask problem, your personal problem. Okay, you can ask me any of your problem.
Maybe I can give you some solution. Okay, Ayush. Okay, so we have learned about route. Okay, so what is route and how we then we learn about a render template. Okay, how we can render a HTML page into Flask. Okay, so what is route? Anyone tell me what is route? Can anybody tell me what is route? I have told so many times. Route is nothing, the endpoint of every page. Django kya? Sir, how to check Flask is running in VS Code or not? One should. It can navigate to another page. Yes. Actually, route is nothing but route is a endpoint of a particular page. Okay. Suppose you have opened a page. Okay. You have opened a page, and if you hit any of the sub pages like this, then you can see here slash verify slash verify. Okay. So this known as slash verify route, and this will be a endpoint of this page. Okay. So this will be the endpoint of verify certificate page, and slash contact will be endpoint of this page. Okay, and this slash contact is known as route. Okay, then we have learned about render template. Render template is nothing, just how to render a HTML page into Flask. Okay, then we have to learn about dynamic data inject with Jinja 2. Okay, how to use Jinja in our Flask app, in our web app with URL. Okay, so this is slash name means this will be our variable. Okay, so if I enter the name here, it gonna use as a user parameter. Okay, it can use as a user parameter and go to user.html page with Ginger 2. Okay, then our third, then next we have to learn about request, how to retrieve data from our front end, okay, with post method, and how to catch any of input field data to variable. Okay, and then how to redirect to another page, how to redirect another page with redirect and URL for. Okay, now guys, I have show you something. I'll show you something. Okay, if you write like, if you want to redirect to thank you page, if you want to redirect to thank you page, okay, so return redirect URL for thanks. So you can write like this, redirect your URL for, and then thanks means this function name. Okay, or you can also write like this, you can also write like this, return redirect, return redirect, and slash our route name, which is thank you, which is thank you. Okay, so you can use URL for, then the function name which is present in this particular route, and you can write the redirect and the slash route name as well. Okay, both are what same. Okay, both are same. Okay, so this is the old version and URL for the new version. Okay, sir, please tell me, will get certificate. I only attend for this. ओके जसू, अटेंड कर लो, फिर मैं देख लेता हूँ. नो प्रॉब्लम, एडिट एडिट विथ मी. ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास, means the previous day's class actually.
from the previous this class, we have learned about database, how to connect, a database with Flask. Okay, so we used SQL Alchemy. Okay, means this is relational database. Okay, so I have shared with you how many types of database are there. There are two types of database, relational and non-relational. Okay, so relational means SQL and non-relational means no SQL. Okay, so we use SQL database. Okay, today we will learn about Excel as a database. Okay, this is the new thing. This is discovered by me. I use Excel state as a database. Okay, now this is how to configure your database with SQLite and how to declare, then how to create a database model. Okay, then I have show you what is the def REPR. This is function formula of represent. Okay, then create a route, then send the database to student. Then this is the our TRUD operation. So this is gonna our create the database. This is add or update. This is delete, and this is for read. Okay, how many hour of this class? Let's see how many hours can take. Okay, but don't worry, you have enough time to have your dinner. I'm not gonna teach like 10 p.m., 11 p.m. Okay, I think today's we can complete today's class earlier than the previous classes. Okay, okay. Now let's create a new file. App 5. App 5.5. पता था तुम लोग अटेंडेंस लिंक करोगे. Okay, today we will learn about session in Flask. Okay, what is session? Does anyone have any idea about session? Session क्या होता है? ये जो session है, session किसको बोलते हैं? Session क्या होता है? Does anyone have any idea about session? No, no. Okay, 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 okay. Don't worry. I will explain. Session is used to store data. Okay, session is used to store data per user. Okay, like login info. Okay, so data is stored on the server, but session ID is stored in the browser cookie. Okay, let me give you an example. Okay, uh, you have social media account like Instagram or Facebook. तुम लोग मतलब सोशल मीडिया अकाउंट तो है ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक है तुम लोगों के. ओके, सो I don't know you noticed or not, but whenever you go to Facebook, okay, then it log in your data. Okay, it's log in your data. Okay, so if I visit Facebook,
if I visit my Facebook and if I log out my account, okay, if I log out my account, and this is not my ID actually. Okay, this is, and if I hit my account, okay, it's take password. Okay, I have never log in my account. Okay, so I have forgot my password actually. Okay, okay, same. I will explain with ChatGPT. Okay, so if I enter the ChatGPT and log out, okay, and log out, and if I hit the login again, if I hit the login again and choose my account, so uh, if you take password or not, okay, यहाँ पे मुझे मुझसे कोई पासवर्ड मांगा या ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया. Okay, I don't know you noticed or not. Whenever you log out your social media account like Facebook or Instagram, then you want to log in again. It cannot ask your password. Okay, it can log in directly if you hit the login button. Right? Am I right or wrong? Am I right or wrong, guys? Please let me know. Yes, but same thing when you try to log in your Facebook or any social media account to another device, your friend mobile, your uh, father or your mother mobile. Okay, it takes password. But whenever you try to log in your account into your device, it cannot take password. It cannot ask for you password. Okay, it log in directly if you hit the login button. Okay, so this is the concept of session. So session is used to store the data पर यूजर. ओके, सो सेशन का मतलब यही है, डेटा जो है वो ब्राउजर की कुकी में स्टोर होता है. लाइक तुम अगर लॉग इन करते हो, ओके, इफ यू लॉग इन योर ब्राउजर कुकी, okay, your browser cookie store your username and password for a particular time. It can be 1 month, it can be 1 week, it can be 2 months. Okay, depend on the platform. Okay, then if you log out, then it still store your browser still store the your information. Okay, then whenever you press the login, okay, so it's logged in without take your password because your login info is stored into your session. Okay, समझ में आया सेशन क्या है? I hope you understand what I am trying to say. I hope you related this thing. Relate this thing, I hope. Okay, session is not stored into the server or database. Okay, remember, session is not stored on your server or database. Okay, it's stored into your browser. Okay, तुम्हारा ब्राउजर में ही स्टोर रहता है सेशन. ओके, तो इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग. ओके, सो इफ यू टेक एनी वन सेशन, you can log in their Instagram or their Facebook account, their social media account without password. Okay, this known as session hijacking. This is the concept of cyber security. And obviously, बात है, I'm not gonna show the session hijacking. Okay, okay, home. Explain again. I'm explaining again. Okay, whenever you try to log in with your social media account or any of your account. Okay, then if you log out, then log in again. Okay, it cannot take your password. It can log in you directly, right?
Okay, it can give you, it can login you directly without taking your username or password if you hit the login button, right? So this is the concept of session. Okay, so how without giving password and username it login? Okay, because your username and password it's stored as a session into your browser. Okay, so this is the concept of session. We have to save password? No, you don't have to save password actually. When if you guys notice, when you visit any website, it can ask for you allow cookies, allow cookie, deny cookie. Okay, I think you guys notice. I'm not sure you noticed or not, but if you visit some websites, it can ask you for please accept cookie or allow cookie or deny cookie. Okay, so you have to allow this, right? Okay, now we are gonna use session in our Flask app. Okay, okay. So first of all, you have to import your Flask. You can import from Flask, import Flask session. We are gonna use session. We use redirect and we use request. You guys familiar with all of this, and the render template, and we use render template. Okay, then we have to create a app. App equals to class, class and name like this. Okay, then you have to declare a secret key. This is required for session. Okay, for session security, you have to create a secret key. App dot secret key. Okay, app dot secret key. So it's gonna anything. It can be anything. I like super secret, super secret. Okay, don't share your secret key with anyone. Okay, then make a route app with app dot root and forward slash means home page. Okay, then create a function for this route dev home. Okay, then we check, if if username, if username uh, if username in session, if username in session, अगर सेशन के अंदर यूजरनेम हो तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कहाँ पे भेज दो उसको. ऑलरेडी वी हैव कॉन्टैक्ट इंडेक्स स्टूडेंट. ओके, भेज दो उसको home dot html. Okay, we haven't created the home dot html page yet, but we create soon. Okay, and we use parameter, username parameter, which is session username, session username. Okay, I will explain, don't worry. And then if username do not present in session, then it return return to return redirect to login URL slash login route. Okay, sorry, I have to write return redirect to login. Okay, then create a login route for login, app dot root and
login, app.root login, and allow the method, allow the get and post method with this root, because obviously we have to enter the username. So get and post. Okay, watching class. Very good. Okay, okay, I will check. Get and post. Dev login. Okay, so as you know, guys, as if request dot method equals to post, then username equals to request dot form username, and make this and store this into session. Okay, so how to store in session? So session username equals to username. Okay, then return and redirect to your home page. Okay, you can use, guys, return, redirect, URL for and home function name. Okay, both are same. Then return render template login.html, our login page, login.html. Okay, then we have to create another route called app.root slash slash logout slash logout. Okay, and create a function def logout, and clear your session. When anyone hit the logout button, then click the session, remove the session.pop, session.pop username, and default value will be none means session empty. Then it should be returned to return redirect to login page. Okay, don't worry, guys, please stay tuned. I will show the output. Okay, that's gonna be crazy, and you can understand what is session and what I'm trying to say about session. Okay, okay, then you know, guys, how to run with this. Okay, sir, please tell me, I will get certificate as this first class. Okay, Jitsu, just fill up the attendance link. Sir, one class is attended, आता है certificate. Just attend this class. Okay, now we have to create a login.html and home.html. Okay, just create inside the templates folder. Okay, so I have told you, you have to create all HTML page as at your template folder. Okay, so first create login.html, import boiler template, and just I'm not gonna use any styling for now. Login, and from method will be post, and just one input field. अरे यार क्या लिख रहा हूँ? One input field, input type text, and name will be username.
user name and placeholder. Placeholder means inside the inside the input field the watermark is called placeholder. Enter your username and it required. You cannot skip this. And, and button is gonna be type submit. If anyone hit the button, it send the username to server using post method. Login. Okay, so this is our login.html page. Then we have to make our home.html page, which gonna be small home.html. Home.html import as boiler template and h2 tag for heading. Welcome. We use Jinja2 here as we pass username as parameter here. We send at home page as username. Okay, so we are use Jinja2 here for username. Just for duplicating and create a logout button as well for clear the session. For clear the session. A.href and URL for logout. If anyone hit the logout button, it's redirect to logout route. Okay, we have learned at this, I guess. Okay, for logout. And the button name is will be log out. Okay. Why are you not taking password to look like beautiful? Okay, when I am create the project, okay, time is very short. Okay, when I am creating the project, then I will take the password to look like beautiful. Okay, okay, just run this. Okay, now it's run on this server. Okay, now it's take a login. Okay, so what is my name? Ajay. Hit the login. Okay, there is nothing. There is nothing. Okay, I have not saved the home.html page, guys. Okay, now let's try. Okay, so here you can see welcome Ajay. Okay, so if I visit my this port, okay, if I visit this port, so it log in. Okay, whenever I visit this URL, it log in. Okay, it cannot ask me for login. Okay, but if I hit the logout, then if I visit this URL, it asks me for login. Okay, this is the concept of session. Okay,
So like if I log in this with Ajay and press the login, then it welcome to Ajay. Okay, so it's stored in session. Okay, then I have closed all the tab. I have closed all the tab. Okay, I cannot close this tab obviously because my in-stream is ended then. Okay, then if I open again, it login. Okay, because it's stored in the session. Okay, but if I use the logout button, then you can see it's not gonna use if I visit this. Okay, then now another thing, if I click my login with my real name, okay, it's login. Okay, but I'm gonna use my another browser. Okay, if I use another browser, बहुत दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हूँ, क्या क्या आ रहा है, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस गाइस. Okay, and if I not this browser actually. Okay, now if I visit this URL with this browser, then it asks for login. Okay, but if I paste the same URL with same browser but in different tab, so it's already logged in. Okay, so this is the concept of session. Okay, ब्लैक माम्बा नहीं, वो ब्लैक माम्बा नहीं है हम. चलो, ब्लैक माम्बा की कहाँ गया वो ब्लैक माम्बा नहीं था, वो रेड स्नेक था. Okay, so this is the concept of if I use this browser, mine, then it also cannot log in. Okay, but in the same browser, if I visit, it's login. Okay, now there is another concept. Okay, there is another concept. Gandhiji. There is another concept. Okay, if you can check the session ID. Okay, just right click of your mouse and click the inspect button. Okay, then go to the application area. Okay, click this and the application area, then you find for cookies. Okay, you can see the cookies here. Click the cookies and click this your URL. Okay, then you can see it stored the session. Okay, you guys check the interesting thing. Just let me give some time. Okay, here I'm not gonna enter my username. Okay, I'm not gonna enter my username, but I can log in the same thing. I can log in the same thing using session. Okay, so same inspect. और यार माइक्रोसॉफ्ट एज का कहाँ होता है, दिस इज एप्लीकेशन साइट. हाँ, keys. Okay, so there is no session, guys. Okay, because I have not logged in here, there is no session. But in this tab, there is session. Okay, just copy the session value. Just double click it, copy the session value, and go here, and inside the name tag, write session, and inside the value, paste the value. Hit enter. Okay, and visit the home route. Visit the home route. Okay, not home route, I guess. This is the this will it's gonna be your only forward slash. Okay, so it can be welcome or no. Okay, so I have no mm, I have no enter my name. Okay, but it show welcome or no at Microsoft Edge with session. Okay, so this is use
session login. Okay, now look this. Here my session ID, if I hit the logout button, if I hit my logout button, then session remove. Okay, you can see here session will remove. Okay, then if I click this as well, then it's again redirect to my login page. It's again redirect to my login page because there is no session. Okay, and if I hit any of your name, any of your name, ARK, any of your name, ARK, and hit the login button. Okay, it's stored a session. It's stored a session. Okay, same if I enter another page and paste not my session, paste the same URL. So this gonna mm, use my session to log in. Okay, so this is the concept of session. I hope guys you understood about session. Okay, if I visit the login page, so and if I remove the login again, so it's can write the welcome ARK. Okay, but if I visit login page, then if I remove this session, if I delete this session, then visit the this page, it cannot go the welcome ARK. It will redirect to me the login page. Okay, so this is the concept of session. I hope you guys understood because the cookies are only stored for that particular browser, not for another browser or incognito tab. Yes, it is. Is it possible to take multiple details in session? Yes, why not? I will show. I will show. Don't worry. I will show. I will show in the project part. Okay. Okay. Let's make a password session. Okay. Okay. Just create a dummy username and password. Okay. So I'm gonna write valid. I'm not you gonna use the database. Okay. Just for your learning purpose. Valid username we can be admin and valid password will be 1234. Okay. This is the hardest password in the world. Then same the root. If username in session, then return redirect to home page. And okay, let's create for another root. Let's create another root for dashboard. Okay, let's change the login page. If method post username for username, and we have to write a password. I write here pwd equals to request dot form request dot form pass password. Okay, request dot password. Then I have to check if password and username is valid or not. Okay, how I can I check if username equals to my valid username and pwd equals to valid password. If yes, then only session username equals to username. Okay, okay, guys, I'm not gonna use.
Okay. Let's move. Let's try. Okay. Then return redirect to this page. Else, okay, I have to write this question. This question and else what will happen? Obviously, return to return to login page. Else, just I'm gonna copy it and paste it, cut it and paste it. Okay, return render template and okay, return to return same thing. Return render template login.html. And if anyone use the invalid, then pass the error message. Error equals to invalid. Invalid. Invalid username or password. I'm just write invalid. Okay. Okay. Now create another route for dashboard. Another route for dashboard. So app dot route and I'm gonna use dashboard. Dashboard. Okay. So function will be dev dashboard and obviously if username username इन सेशन अगर सेशन में यूजरनेम प्रेजेंट हो अगर सेशन में यूजरनेम प्रेजेंट हो तो रिटर्न सेम रिटर्न रेंडर टेम्पलेट return render template to dashboard.html and pass the username parameter to the session username. Okay, session username and return और अगर नहीं प्रेजेंट हो तो किस में रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज में रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट टू login. Okay, so log out gonna same for this. Okay, now we have make a dashboard. So if if username present तो फॉरवर्ड कर दो इसको स्लैश डैशबोर्ड में इसको रिडायरेक्ट कर दो okay and our first route will be if username in session then return it's not gonna render template it's redirect to what redirect to dashboard okay otherwise it's redirect to login okay now create a login.html we have already I'm gonna just modify this okay okay attendance link where ओके अटेंडेंस लिंक मिलेगा अभी भी 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी देखो यूज जिंजर टूल टू शो आवर नेम सेशन रूट इज लुक लोकली ओके ओके अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड गलत दे ओके so how we can write condition in html you guys tell me
how we can write any conditional statement in HTML body. You have done my previous class, right? So how can we write any conditional statement like for loop? It can be for loop, if else, or while loop. How can we write conditional statement in HTML with Jinja 2? Please tell me. Yes, Jason. Uh, curly braces and percentage. ओके अगर लॉगिन का यूजर नेम और पासवर्ड कोई गलत डाला, ओके, मीन्स इसमें मैंने क्या दिया यहाँ पे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, अगर कोई गलत दे तो एक इरर थ्रो करेगा, राइट? एक इरर थ्रो करेगा, इरर इक्वल्स टू इनवैलिड, ओके, एक इरर थ्रो करेगा। मतलब अगर इरर थ्रो करे, इफ इरर, राइट? सो कंडीशन मीन्स परसेंटेज, so if error, then एक इनवैलिड करके एरर आएगा, एक लाल कलर का। तो इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल दूंगा, स्टाइल इक्वल्स टू कलर गुना रेड, रेड, एरर तो रेड करके ही आता है। एंड द मैसेज फ्रॉम एरर, मैसेज फ्रॉम एरर, मैसेज फ्रॉम एरर which can be, which is invalid. Okay, so this obviously is show invalid here. Okay, and we have to close the conditional statement here. Okay, so this is the syntax of Jinja. So end if, okay, then from method post, then username, then we have to make a password, input type password, name will be password, placeholder will be password, and it's required. Okay, I am just use two BR tags for good looking. BR means break, line break. Okay, then close the from. I'm not gonna change anything. Then make a dashboard page. Okay, I'm not gonna create another page. I'm just modify the home.html. Just rename it. We're gonna rename dashboard, BOARD. Okay, now the dashboard will come the name, and then a message. We tag this is your dashboard. This is your dashboard, and tag a logout button. Okay, save it, save it, and save it. Okay, so my login credential is admin and 1234. If I run this and hit this, okay, so there is the login page. Okay, there is the login page. Use curly braces. Okay, so if I use anything else like FG or password, anything else, and hit the login button, so it show invalid with red color. Okay, so as we have created. Okay, then if I enter the actual username, which is admin, which is admin, and password is 1234. I hit the login, so it's logged in. It's logged in. Welcome admin. This is your dashboard, right? And if I copy this URL and paste this URL again, so you can see welcome admin. This is your dashboard. Okay. Or if I close this as well and visit again, okay, visit again, just my URL, then welcome admin. This is your dashboard. Okay, so because this is stored in session. Okay, so whenever I
visit this, it's stored at session. But if I enter the same URL with another browser, in another browser, okay, so it redirect to me into login page. Okay, so if I forcefully write the dashboard endpoint, if I forcefully write the dashboard endpoint slash dashboard here, so it's redirect to me login page. Okay, so you have to log in. So I don't know the login credential. I don't know the login credentials. That's why I cannot log in with this. Okay, and this is logged in. Okay, but the interesting part is you can log in with session working perfectly. Yes, sir, can you use database using Supabase? Yes, why not? Okay, but the interesting part is here. Okay, but the interesting part is here. If I click the inspect and application tab and copy the session value, from here and go to my another browser where I cannot know the actual username or password. I cannot know the credential, guys. And click the inspect here as well and click the application tab and this cookies portion. बड़ा कर देते हैं. Okay, and write here session and just paste the value here. Paste the value here and hit enter and close. And visit the dashboard. Now you see the magic. How? I can log in without username, without password, just using session ID. Okay, so this is the magic of session. And if I hit the logout button from here, if I hit the logout button, so it remove the session. It remove the session from here, but I guess it cannot remove the session from here because session is stored in browser, not the server or database. Okay, okay. Understand about session. Okay, but guys, if you think you can log in the Facebook or Instagram, anyone else with session, but you cannot. Okay, because they use JWT. Okay, JavaScript Web Token. Okay, so JWT is more secure than session. Okay, now let's create a small project. Okay, just 8:30. Just create a small project. It's hardly takes 15 to 20 minutes, not more than this. Just create a small project and let's see how to deploy the project in render 3. Okay. Okay. If you have any doubt or any confusion, you can ask me about session. Okay. Now, I have shown you. Okay. Just close the server here. Okay. So I have shown you just I write the valid username and valid password as a variable, but in reality it's stored at database. Okay, but how you can store the username and password in database, you know, guys. Okay, you have learned about database, so you guys know how you can store the username and password at database. Okay, so it's check from database and store it into session. Okay, you guys do it yourself. Okay. Okay, now if you have any doubt or any confusion, any question, then ask me. Okay, don't leave this session yet because you haven't filled up the attendance. Okay, without attendance, you cannot eligible for certificate. Remember this. Okay, don't worry. I am gonna send the attendance link 15 minutes after 15 minutes. Okay, I'm I'm sending. Don't worry. Just make a small project. Then before deploying, I have sent the attendance link to you.
then fill up the attendance, then we will see how to deploy this with render. Okay. Sir, how to encrypt the data? You can encrypt the data as well. Okay. I can show you how to encrypt the password, but it can be long the session. Okay. ये बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा. Okay. Okay. So let's make a small project. Yes, using Bytecrypt. Okay. Let's make a small project and see how to deploy this in a with a render. Okay. Okay, guys. You suggest me we will create a new app or just deploy this. I'm just created this portion. Just deploy this into render or create a new app, create a new project. You guys suggest me. क्या मैं एक नया सा फाइल फिर से क्रिएट करूं और इसको ही जो बनाया हूं मैंने, इसको थोड़ा स्टाइलिंग फाइलिंग करके चैट जीपीटी के मदद से स्टाइलिंग करके इसको ही रेंडर में डिप्लॉय कर दूं. सजेस्ट मी गाइस. ओके. न्यू. डेटा खत्म होने वाला है. डेटा खत्म नहीं होगा किसी का. अगर हो भी जाएगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके. ओके. अटेंडेंस लिंक. जरा रुको. न्यू प्रोजेक्ट. अच्छा चलो न्यू प्रोजेक्ट ही दिखाता हूँ. बट आई एम नॉट गोना यूज ए ह्यूज प्रोजेक्ट. जस्ट यूज दिस स्मॉल प्रोजेक्ट. ओके. जस्ट लॉग इन. जस्ट login and dashboard. This same project, but here I use the valid username and valid password as the admin and 1234, but where I use Excel file as a database. Okay. Just it hardly take 15 minutes, guys. Not more than this. Okay. Okay. I'm gonna deploy this. So I will create a new folder called login, login app. Okay. Login and open my VS Code here. बारिश आ गया guys यहाँ पे. Okay. Create a templates folder. Templates. Templates file actually. Okay. मैंने फाइल क्रिएट कर दिया. सॉरी. फोल्डर क्रिएट करना चाहिए था. Templates. Okay. And app dot file. App dot file. Okay. Okay. Create a database in Excel. I don't think any teacher use Excel as their database. I don't think so. Okay. Here my first column is username and second column is password. यहाँ पे बारिश आ गया गाइस. अगर बिजली काट हो गया तो एंड ये सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा. अगर बिजली कट हो गया तो मेरा वाईफाई चला जाएगा और ये सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा. ओके. ओके. यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं लाइक एडमिन 1234. लाइक तो दूसरा मेरा नाम दे देता हूँ. उसका जो पासवर्ड होगा 000. तो अरे एक ही जीरो आ गया. 00 नहीं. 7000. ओके. और कुछ एक दे देते हैं. चलो कुछ दे देते हैं. क्या देते हैं. इसका नाम दूँ. चलो. चलो फिश दे देते हैं. अरे जो भी मेरा दिमाग में आया दे दिया. 4455.
हो गया पासवर्ड हमारा। ओके, तो these are my database। ओके, database with excel, but I'm not gonna use excel format, I'm gonna use csv format। okay, where my folder is, where my folder, क्या लिखा था, login a b c d e f g a b c d g h i l, कहाँ पे गया, ये रहा। ओके, user and format I will save in csv। okay, I can use excel format as well, but I'm gonna use csv। okay, now let's make a app। just I'm not gonna write entire thing, and just copy it and paste it। access for best database, yes। अरे यार अटेंडेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा। okay, I'm just copy it and paste it guys for saving the time for you, for you only। okay, I'm gonna read this csv file। okay, so how you can read your csv file is the part of data science or data analyst। okay, you can use pandas, import pandas as pd। okay, then my Flask tab, my super secret key, I remove this and I'm gonna create a function, def valid user, validate user, यहाँ पे होगा username and password as a parameter। okay, sorry guys, as a parameter, and create a read this csv file using pd.read csv। okay, don't think about guys, okay, because you are not gonna use your csv file as database, this is actually not the best practice। my file name, my csv file name, which is user.csv, user.csv, and you have to make a user row, user row equals to df, df means data frame। ओके आई मैंने gf लिख दिया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। df एंड df, पहले इसका यूजर नेम को निकालो, कॉलम का नेम क्या क्या था, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो यूजर नेम, तो पहले ये वैलिडेट करेगा, यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम एंड एंड सॉरी गाइस, df पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ओके गाइस, हो गया। ओके, अगर ये कंप्लीट हो या ना हो, मैं विद इन 10 मिनट्स में अटेंडेंस लिंक दे दूंगा। ओके, आई विल सेंड द अटेंडेंस लिंक विद इन 5 मिनट्स, 5 नहीं 10 मिनट्स में, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम। रिटर्न नॉट यूजर रो डॉट एम्प्टी, अगर यहाँ पे नहीं हो तो, अगर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिल पाए तो, देन हमारा जो लॉगिन रूट है उसको हम डिफॉल्ट रूट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड make our login route in is the default route।
Okay, so def login if request method post username from username, password from password, and if our condition will be if our condition validate user if validate user which is username and pwd okay, which I'm gonna take from html from which we are gonna take from html from username and pwd okay, अगर हो तो क्या करें session username equals to username and return redirect to dashboard okay, and else अगर नहीं हो तो ये यहाँ पे ये नहीं करेगा और एक कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूँ इसको बोलते हैं फ्लास्क FLASH ओके आई हैव टू इंपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक क्लियर कवर हो जाएगा फ्लैश एक फ्लैश मैसेज शो करेगा यहाँ पे FLASH फ्लैश ओके जस्ट अ फ्यू मिनट गाइस अटेंडेंस लिंक मिलेगा सबको मिलेगा फ्लैश invalid username or password okay, then return to render template login.html which is same which I'm gonna stay same, then dashboard if username in session then return render template dashboard.html user session user okay, or return to redirect to login and logout will same okay. Now our python file is completed. Now make a login.html file which I'm gonna copy again login.html okay, I copy the login page again for saving the time or save the time okay, ओके क्लास मैसेज का एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ इन लोगों को और कोई लॉगिन गलत करे तो ओके जस्ट स्किप द क्लास मैसेज का जो मैंने यहाँ पे लिखा था ओके, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्लास मैसेज का एंड विथ मैसेजेस इक्वल्स टू गेट प्लस क्या था उसका सिंटैक्स मैसेजेस, अगर ये सिंटैक्स गलत हुआ तो इसको पूरा रिमूव भी कर दूंगा विथ कैटेगोरी इक्वल्स टू ट्रू कैटेगोरी इक्वल्स टू ट्रू ओके, if message then सेम मैसेज जो आएगा कि style equals to color will be red and the message is our MSG okay, then we have to close the if then close the with close the end if okay, don't worry guys, I will end the session here. I will end the session because यहाँ पे बारिश हो रहा है that's why मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ then it's remains same यूजर नेम प्लेसहोल्डर पासवर्ड
Then, okay, save it, make another dashboard.html, dashboard.html, which I'm gonna copy it from here. I'm gonna copy it and paste it. Copy it and paste it. Okay, same thing, same username, same, everything even same. Okay, now let's check. Okay, I hope there will be no error. Run, हो जा. Okay, guys, it's running. Okay, so enter username और पासवर्ड कुछ और डाल के देखते हैं पहले. ओके, फ्लास्क मैसेज नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट गोना फिक्स इट. सर नेटवर्क खत्म होने वाला है. अरे अरे, हो जाएगा. ब्रो, इफ यू आर रिच गो थ्रू ए पेड इंटर्नशिप. आई एम नॉट रिच विशाखा. आई एम नॉट रिच. पता है, अगर रास्ते में 2 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है तो भी उसको उठा लेता हूँ. आई एम नॉट रिच एक्चुअली. ओके, नाउ यूज this credential. Okay, use this Arnab and 7000 or any of this. Of आप क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओह ओ, another problem. ओके, यू गाइस, तुम लोगों को पहले दे ही देते हैं अटेंडेंस लिंक. ओके 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 ओके. ओके, अटेंडेंस लिंक तुम लोगों को दे ही देते हैं. खा जाओगे मुझे. बट यू प्रॉमिस मी, अटेंडेंस मिलने के बाद चले मत, भाग मत जाना. ओके, पूरा सेशन को देख के जाना. अगर अगर बोरिंग लग रहा है तो चले जाना, कोई बात नहीं. अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो देखना. ओके, अटेंडेंस लिंक. अरे मैंने तो अटेंडेंस लिंक बनाया ही नहीं, तो डे 2 वाला था. चलो इसको ही एडिट करके डे 3 कर देते हैं. इसको डाउनलोड रेस्पॉन्स कर लेते हैं. डाउनलोड हो गया, और इसको कर देते हैं डिलीट और रेस्पॉन्स. इसको एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स कर देते हैं, और क्वेश्चन ओके. चलो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात कही सुजल. क्या करूँ जल्दबाजी में, बोलो. तुम लोगों को ही तो जल्दी है. ओके, तुम लोग अटेंडेंस फिल करो, तब तक मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या यहाँ पे फॉल्ट था मेरा. ये रन क्यों नहीं हो रहा है. ओके गाइस. ओके, जब लॉगिन कर रहे हैं. ओके, मुझे डिबग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ. तो गाइस, डोंट माइंड, मैं चैट जीपीटी से डिबग कर लेता हूँ.
रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन, यहाँ पे कुछ गलत था क्या? ओके ओके ओके, आई हैव सीन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, आई गेस। ओके, तुम लोग तब तक अटेंडेंस फिल करो। अटेंडेंस हो जाने के बाद, हाँ हाँ हाँ, सब लोग एक बार डान लिख दो। अरे यार, क्या दे रहा हूँ तुम लोगों को? व्हेन आई गेट द बूटकैम्प सर्टिफिकेट, मिल जाएगा एक एक दो दिन में। मिल जाएगा मिल जाएगा, मेल में सेंड किया जाएगा। मेल में सेंड कर दूंगा। आई डोंट नो व्हाई इज द प्रॉब्लम। इसको हटा ही देते हैं क्लास मैसेज को, यहाँ पे। इसको हटा ही देते हैं, एक जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। अब इसमें देखते हैं चेक करके। इफ यू फाइंड एरर यू कैन टेल मी गाइस। सेम। इफ यू फाइंड द एरर यू कैन टेल मी गाइस। ओके, प्रिंट इनवैलिड। प्रिंट इनवैलिड, अच्छा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड गाइस। आई थिंक in CSV file, my password is stored in integer format, but in this portion, it take the password as string format, I guess. I guess so. Concatenate into integer. Concatenate into integer. Let's try it again. That means 1, 2, 3, 4. Now it's working perfectly. Actually, my password it's stored as an integer format, but in this form it takes as a string. Okay, so that's why. Okay, so this is welcome admin. ओके, कितने लोग अटेंडेंस किया है? ओके, फॉर्म को बंद कर दूंगा, जल्दी करो। Which one is favorite?
जय हो सर, आर यू प्लेइंग फ्री फायर और पबजी प्लेयर आर यू? ओके, अगर मैं पबजी बोलूँ तो फ्री फायर प्लेयर को बुरा लगेगा, अगर मैं फ्री फायर बोलूँ तो पबजी प्लेयर को बुरा लगेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पबजी खेलता था। पबजी मेरा फेवरेट है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, so this is our session based login. Okay, so use if I use another URL, okay, if I hit the logout or logout, it should visit the home URL. No, आयुष, मैं रोज नहीं आता। ओके, ओके, okay, so if I use any of this username, okay, so think like this is my database. Okay, user.csv, this is my database. Okay, if I use any of this username and password like fish and 44, okay, any of these fish 4455, okay, it login successfully. Okay, so I use CSV file as database. Okay, now it's 9:04. Now let's make it to deploy in render. Okay, guys, just a few minutes. Okay, I'm also planning to start daily life. Okay, I use full support from me. Any suggestion? Which topic you are gonna use for डेली लाइफ? ओके, कौन सी टॉपिक में जो देना चाहते हो पहले वो बताओ, उसके बाद मैं सजेशन देता हूँ। ओके, 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 जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। हो गया, इसका थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। आई एम नॉट गोना स्टाइल बाई माई सेल्फ, आई कैन नॉट राइट CSS फॉर नाउ। ओके, आई एम गोना यूज चैट जीपीटी फॉर स्टाइलिंग। ओके, देन डिप्लॉय ऑन रेंडर। ओके, आई एम गोना यूज चैट जीपीटी, मेक इट स्टाइलिश। स्पेलिंग गलत लिख किया। स्टाइलिश with CSS best UI UX. Electric DSA machine coding prep. Okay, Ayush. Uh, it can be great. It's about DSA at let's code at Frontend machine learning. हाँ, कर सकते हो। ओके, CSS आ गया हमारा, उसको पेस्ट कर देते हैं। अब थोड़ा डैशबोर्ड को भी स्टाइलिंग कर देते हैं। नाउ फॉर दिस, देन हम रेंडर में डिप्लॉय करेंगे इसको। हो गया, इसको पेस्ट कर दिया। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं लास्ट टाइम, देन उसके बाद हम लोग रेंडर में डिप्लॉय करेंगे। ओके, कैसा लग रहा है एक बार देख लेते हैं। ओके, वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओके, जस्ट यूज माय नेम एंड पासवर्ड। ओके, welcome on, this is your dashboard, this is session login, guys. Okay, so if you visit this session, so this is gonna your session login. Okay, if you have any question, any doubt, you can ask me. Otherwise, I'm
deploying this into render. If you have any doubt, any question, you can ask me. Can you please share your LinkedIn? Would love to connect. Acha, you love to connect with me, Ayush? Just mail me. Okay. Keep my mail. Mail me, Ayush. This is my mail. मिलेगा मिलेगा तरुण मिलेगा. You will get within a week. Within a week. Within a week. Okay. Now let's deploy it into render. Okay. Now for deploying it into render, you have to push this into GitHub. Okay. You have to push the code in GitHub. Okay. You have to push the all thing. You have to push the all thing. Okay. But before that, you have to create a requirement.txt file. Why? I will tell you. Requirement.txt. I don't know the requirement spelling. I have forgot. Just let me check. Okay. So it's requirement requirement.txt. Okay. So inside this requirement.txt, we have to we have to write the dependencies. Okay, we have to write the dependencies which gonna use by render. Okay, so what are my dependencies? My dependencies are Flask and Panda. Okay, so this is my dependencies module, Flask and Panda. So just write in requirement.txt Flask and Panda. Okay, if you use any any other libraries in your app in your server, you have to write the name. If you use like if you use numpy, okay, so just write the numpy inside the requirement.txt. Okay, if you use sklearn scikit-learn, then use the packages name inside the requirement.txt. Okay, and you have to write another packages name which is gunicorn. So actually gunicorn is required for render. Gunicorn. Okay, your all dependencies name and gunicorn. Gunicorn should be there. Okay, and your dependencies names should be there. Okay, in my case, I have only Flask and Pandas, so that's why I have write Flask and Pandas. Okay, if you have any other dependencies, can I? Okay, Tarun, you can apply for C and AIML now. Okay, okay, requirement filling a form. स्पैमिंग मत करो तरुण. कौन सा लिंक अनुश्री? अच्छा, इसको सेव कर दो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को. ओके, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को एक बार देख लो. फोल्डर स्ट्रक्चर में आपका ऐप डॉट पाई रहेगा, आपका ऐप रहेगा, पाइथन फाइल रहेगा, उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग में ही सेम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी रहेगा और टेम्पलेट्स फोल्डर रहेगा, और इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर you have to put all your HTML files. Okay, but you cannot use CSV file obviously as for your database. Okay, now minimize it and open your GitHub. You have to put your code to GitHub. Create a new repo. You can write any name like render demo, render demo, render demo. Okay, you can write anything. Create repository and
push the code into GitHub. Git git init git add git commit m first commit का स्पेलिंग भी गलत लिख दिया मैंने. ओके, डोंट जज मी विथ स्पेलिंग गाइस. चलो इसको पुश कर देते हैं. हो गया पुश. तो रिफ्रेश कर लेते हैं. So now my all folders, files, and dependencies are present in my GitHub render underscore demo repo. Okay, okay guys. हाँ, इंटर्नशिप 1 मंथ होगा, बट ये जो है ये ओनली बूट कैंप है, इंटर्नशिप नहीं है. अटेंडेंस लिंक नहीं शो हो रहा है. ओहो, कहाँ गया मेरा अटेंडेंस लिंक? ये लो अटेंडेंस दे तो जल्दी से. ओके, अब हो गिटहब में पुश होने के बाद, ओके, आफ्टर पुशिंग योर कोड into GitHub, just visit render.com. Okay, just visit render.com. Okay, so I have already logged in, so that's why it's show dashboard. If you just click this login or sign up button and sign up with your Gmail ID. Okay, you guys know how to sign up better than me. Okay, okay, just click here and sign up. Okay, after signing up, just create here plus add new. Okay, right click here, add new web service. Okay, guys, web service, and here I have linked with my GitHub repo, but here for the first time it asks for GitHub link, and click the link with GitHub and give the your GitHub username and GitHub password. Then it links successfully. Okay, then choose your repo. I am gonna use this render demo which I have created for now. Okay, render demo. Okay, choose the render demo. Choose your repository actually, and name your project. Keep it the render demo or Flask. Let's keep the Flask demo. Flask demo. Okay. Then language Python 3. Obviously, you guys all use the Python 3 version. Okay. So branch main. Okay. Don't इसका छेड़छाड़ी मत करना कुछ. Okay. And pip install requirements.txt. ओके गाइस, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट लिखा था, किंतु वो रिक्वायरमेंट्स होगा. मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ. मैं यहाँ से एस हटा दिया. हो गया. टेक्नोलॉजी एंड कुछ नहीं कर उसके बाद कुछ नहीं करना है. जस्ट यूज दिस फ्री पैकेजेस, बिकॉज कौन ये पेड वाला वर्जन यूज करेगा? कोई नहीं करेगा, आई होप. तो क्या, अगर पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो यूज कर सकते हैं इसको. ओके, दैट्स इट. एंड क्लिक दिस वेब डिप्लॉय वेब सर्विस. ओके, यू हैव टू राइट दिस gunicorn app/app. Okay, so app and app clone app ये क्या है? App मतलब first app मतलब your file name, which is app.py. Okay, which is app.py, and second app means your this name. Okay, your Flask app name, which is app. Okay, if you write anything like app or anything else, so you can write here app, then your custom name. Okay, so my file name is app and my Flask app variable name also app. Okay, so that's why I keep it the gunicorn app:app. Okay, and use this free. Then click the deploy web service button. Now, now it can take a few minutes.
Okay. So first it download from dependencies from requirement.txt. Okay. Then successfully initialize. Okay. Okay, Anusri, I will explain again. How can I get internship certificate? This is not internship Adi X. This is bootcamp. Sir, is it free? Yes, render is free. But you can use paid version as well अगर पैसा हो तुम्हारे पास. Okay. So it can show build successfully. मतलब ये successfully build हो गया. Right, build successfully. Now it show deploying. Don't worry, honestly. I will show the render part again. Now running Gunicorn apps.app. यहाँ पे रनिंग हो रहा है. नहीं सर, गरीब हूँ. गरीब, हम भी गरीब है. सब लोग गरीब है यहाँ पे. Okay, then it deploy and it show available at your primary URL. This Flask demo क्या आ गया एक tfgt on render.com. If I click this, I visit this page. Okay, now this is on live. Okay, if you use this login information with admin, okay, I know guys, this is not a big app. Okay, it's just for your study purpose. Admin and password is kya 1234, right? 1234. And if you hit enter, then welcome at me. Okay, so why this pop-up show? This password is data breach because my password is not encrypted. Okay, I'm not use encrypted, so that's why it shows. Okay, so this is not a good practice. Always encrypt your password. This is session-based login. If you copy the URL, Flask URL, and paste here, it 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 remember me via session. Okay, if I hit logout, then it logout. Okay, I will share this link. I will share this URL with you. You can check, guys. Sir, certificate कब मिलेगा? Can we put in link in profile as render, as we know render as our profile info? Yes, you can. ओके, वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप दूंगा तुम लोगों को. ओके, आई विल शेयर ए बोनस टिप विथ यू. यू कैन विजिट द फर्स्ट लिंक. सर, आर यू डिप्लॉइंग इन विच प्लेटफॉर्म? ये अभी अभी मैंने क्या दिखाया? रेंडर ना. आई एम डिप्लॉइंग इन रेंडर. ओके, ट्राई करो पास. इनवैलिड मत करो. इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड मत दो. तुम सब इनवैलिड पासवर्ड दे रहे हो. एड यूजर नेम में एडमिन दो और पासवर्ड में 1234 दो. ओके, ट्राई एडमिन एंड 1234. ओके, वीडियो के एंड में मैं, अच्छा अनुश्री, आई विल शो द रेंडर पार्ट अगेन. ओके, देन उसके बाद मैं एक बोनस टिप दूंगा तुम लोगों को. बोनस टिप भी दूंगा. जस्ट सेकंड, बोनस टिप के लिए मुझे निकालने दो. वेबसाइट का नाम भूल गया. Sir, cannot we use Vercel to deploy it? Yes, you can use Vercel, but Vercel is basically designed for Express.js and Node.js. Okay, so if you want to Vercel, if you want to deploy your Flask app in Vercel, you have to configure. Okay, so actually to be honest, Flask Vercel में deploy करने के लिए नहीं है.
फ्लास्क जो है वो रेंडर में डिप्लॉय करने के लिए ही है। फ्लटर का बूट कैम्प राहुल सर है और एक सर है राहुल सर, वो लेगा। ओके ओके, सो कैन आई शो द रेंडर पार्ट अगेन? कैन आई शो द रेंडर पार्ट अगेन और नॉट? कौन एक बोल रहा था मुझे? ओके, व्हाई आर यू नॉट लॉगिंग विथ माय नेम? अच्छा शेखर, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सॉरी फॉर यू, सॉरी फॉर दैट। ओके, वेलकम शायद। ओके, रेंडर वाला पार्ट और एक बार से देख लेते हैं छोटा सा। ओके, देन उसके बाद में एक टिप्स दूंगा तुम लोगों को कि रेंडर का जो पेड वर्जन है उसको ही फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। ओके ओके, रेंडर पार्ट देख लो एक बार। फर्स्ट यू हैव टू पुश योर कोड इनटू गिटहब। ओके, देन विजिट render.com। ओके, render.com, click the dashboard page after logging. Okay, if you are not logging, then click the dashboard page. It asks for you login or sign up. Just sign up with your Gmail. Okay, after that you visit this page. Okay, you visit this page, then click this portion, add new. Okay, add new. Click this add new portion and click web service. Web service. Okay, web service वाला portion पे click करना। Then choose your GitHub repo। यहाँ पे गिटहब के साथ कनेक्ट करने के लिए कहेगा, जस्ट कनेक्ट इट विथ योर गिटहब यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन कनेक्ट करने के बाद गिटहब का रेपो आ जाएगा। ओके, जस्ट चूज योर रेपो फ्रॉम हेयर। ओके, जस्ट चूज योर रेपो फ्रॉम हेयर विच इज render.demo, विच माई रेपो। ओके, तो यहाँ पे ऐप का नाम सेट करना, जो वेबसाइट का जो नाम होगा। ओके, कुछ भी चूज कर सकते हो। लैंग्वेज में पाइथन 3 ही रहने देना। यहाँ पे और भी है, नोट जेस, डॉकर, गो, रवि। ओके, और यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में था, एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं रिक्वायरमेंट्स होता है। ओके, एस दे देना। ओके, रिक्वायरमेंट पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, सब कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ पे जस्ट इसको लिख देना, जी यूनिकॉर्न ऐप कोलन ऐप। ओके, इसको लिख देना। ओके, और यहाँ पे आपका प्लान चूज करना। ओके, फ्री वाला चूज करना। अगर पैसे वाला हो तो यहाँ पे पेड वाला भी चूज कर सकते हो अगर बहुत पैसा है तो, वरना फ्री वाला ही चूज करना मेरे तरह अगर गरीब हो तो। और उसके बाद कुछ नहीं, जस्ट डिप्लॉय वेब सर्विस कर देना, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होके एक लिंक दे देगा, एक ऊपर का लिंक दे देगा इस तरह से। जस्ट उस लिंक पे विजिट करना, तुम्हारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ओके ओके गाइस, सर हाउ वेब पेज कैन वी कैन डिप्लॉय एंड वी यूज Netlify? What is Netlify? Tell that. Netlify is basically used for static web page, not dynamic. Okay, वो सिर्फ फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर सकते हैं वहां पे। वहां पे हम लोग बैकएंड को नहीं डिप्लॉय कर सकते नेटलीफाई में। ओके, नाउ मैंने एक चीज तुम लोगों को बताया था, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप दूंगा। राइट, देखो रेंडर के पेज साइड में क्या बोलता है यहाँ पे। ओके, इस पेज साइड में क्या बोलता है। ओके, सो इफ यू यूज द free option, okay, your server is sleep after 15 minutes। okay, so अगर तुम एक ऐप बना के उसको डिप्लॉय कर दिया हो, ओके, अगर इसको 15 मिनट में कोई भी विजिट नहीं हो रहा है, अगर 15 मिनट यहाँ पे कुछ भी विजिट नहीं हो रहा है तो सर्वर स्लीपिंग मोड में चला जाता है। ओके, स्लीपिंग मोड में चले जाने के बाद अगर अगर क्लिक करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। ओके, लाइक मैं एक एग्जांपल दिखा दिखा रहा हूँ। ओके, तो मेरा ये वाला ही पोर्शन देख लेना। मेरा जो स्टूडेंट लॉगिन वाला है वो रेंडर में ही डिप्लॉय है। इफ आई विजिट देयर, तो ये मेरा 15 मिनट से ज्यादा जो है विजिट नहीं हुआ है। ओके, सो दैट्स वाई द सर्वर इज ऑन स्लीपिंग मोड, सो दैट्स वाई इट्स टेक टाइम।
to open the page, right? But if you use this paid version, okay, the server always running. It cannot go to the sleeping mode. Okay, it cannot go the sleeping mode if you use the paid version. But if you use the free version, like me, okay, so it is used the sleeping server. ओके, सर्वर स्लीप में जाने के बाद अगर 15 मिनट के 20 मिनट के बाद अगर यूआरएल में क्लिक करोगे तो ये एक खोलने में टाइम लगेगा। देखो मेरा खोलने में कितना टाइम लग गया यहाँ पे, लाइक 1 to 2 मिनट्स लग गया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टिप्स दूंगा तुम लोगों को अगर डिप्लॉय करते हो तो। सर कैन वी कस्टम यूआरएल फॉर दिस पेज? यूआरएल खरीदना पड़ेगा, गोडैडी से खरीद लो यूआरएल। ओके, मैं एक टिप्स दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा सर्वर कभी स्लीपिंग मोड में जाएगा ही नहीं। ओके, इफ यू डिप्लॉय एनीथिंग into your into render, then and if you choose the free option, okay, if you choose the free option because we are garib, right, then it cannot go the sleeping mode because I have a जुगाड़। चलो जुगाड़ को देख लेते हैं। just go to uptime robot। okay, just go to uptime robot, this page uptimerobot.com। this is actually free website monitoring system। okay, I have already logged in। invalid, okay, okay, sorry, वो वाला email नहीं। go to uptime robot and create your account in uptime robot। okay, and click this new monitor and and paste your url here, paste your Flask url, render url here। okay, like I can paste this url, student login wala। if I paste this student login url at here, okay, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया स्टूडेंट लॉगिन यूआरएल एंड यहाँ पे दे देना मॉनिटर इंटरवल 5 मिनट्स एंड क्रिएट मॉनिटर। तो देयर इज मॉनिटर क्रिएटेड। ओके, तो ये क्या करेगा, ये 5 मिनट्स के बाद मेरा यूआरएल में जाके एक बार हिट कर देगा, एक बार क्लिक कर देगा, तो क्या होगा, मेरा जो रेंडर का सर्वर है वो कभी स्लीपिंग मोड में जाएगा ही नहीं। ओके, तो सो यू कैन यूज अपटाइम रोबोट एंड फ्लास्क फ्री होस्टिंग प्लान। ओके, तो इससे पैसा भी बच जाएगा तुम लोगों का और सर्वर कभी स्लीपिंग मोड में जाएगा ही नहीं। अगर मैं इसको आफ्टर 15 मिनट 20 मिनट, एक दिन 2 दिन एक हफ्ते बाद भी खुलूं तो भी ये एक बार में ही ओपन हो जाएगा। ओके, इफ यू डोंट बिलीव देन आई विल शेयर द यूआरएल विथ यू, आई विल शेयर द यूआरएल विथ यू। ओके, जस्ट ये स्ट्रीम तो मैं अभी एंड कर दूंगा, 15-20 मिनट के बाद एक बार ओपन करके देखना। मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं अप टाइम रोबोट्स को बंद नहीं कर रहा हूँ। जस्ट 15-20 और 30 मिनट्स के बाद इस यूआरएल को एक बार क्लिक करके देखना, 1-2 सेकंड में ही ओपन हो जाएगा। कैन यू सर वी कैन मेक कस्टम यूआरएल? हाँ, फिर से यूआरएल खरीदना पड़ेगा। स्टूडेंट लॉगिन नॉट ओपनिंग, ये आइडिया मेरा ही है, ये सब जुगाड़ू आइडिया। तो दिस was your boot camp। okay, this your Flask boot camp is completed। okay, now you can make a small app with Flask with by yourself, right? खुद से
बना सकते हो ना आप छोटा मोटा ऐप फ्लास्क की मदद से इस 3 दिन के बूट कैंप के बाद। क्या बोलते हो, येस और नो? हाउ मच टेक it will take to receive our certificate after this session? And I attended all 3 classes. And can you explain about certificate process? We will send certificate via your registration email ID. Okay, and you will receive within 1 week. Okay, एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। आज 24 तारीख है। Okay, today is the 24th. You will receive within 29 and 30. Okay, तो 29 and 30 के बीच में मिल जाएगा सर्टिफिकेट। Okay, I have dropped a mail. Please check once possible. Okay, I will check. Vulture, I have told. Okay, okay, guys. So how was the session? How was the boot camp? कैसा था ये boot camp? अच्छा लगा या बोरिंग? नहीं नहीं, वल्चर कोई कोई एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है। कोई एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, जस्ट मेल में सेंड हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं ऐड कर सकते हो, जरूर ऐड कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम गुड वन। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एज वेल। ओके नयन, थैंक यू। थैंक यू गाइस। If you have any question, any doubt, you can ask me. You can ask me anytime actually. Okay, not only now. You can ask me anytime. Thank you, Sewing Studio. Thank you, Shomik Modak. Sewing Studio. Thank you, Vulture, Nayan, Varat, Kumar, Om, Anjali, Isal. Thank you. Thank you, ARK. Waiting for internship. Varat. Attendance link. अभी भी attendance link नहीं शो हो रहा है। चलो जल्दी से attendance दे दो। When सर internship, सर इंटर्नशिप फ्रेंड का ऑफर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। सेशन कब एंड होगा सर? सेशन एंड अभी हो जाएगा। किसी का कोई अगर क्वेश्चन नहीं हो तो अभी एंड कर दूंगा। अभ्रनील बैनर्जी, इट वाज इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सर। अभ्रनील बैनर्जी बंगाली हो? मोनिका सिंधे, यहाँ पे बंगाली कौन कौन है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर ऑल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू जीवन। ओके अभ्रनील, वेरी गुड। बंगाली फ्रॉम कोलकाता। आई एम ऑल्सो बंगाली फ्रॉम कोलकाता। SSR. Next bootcamp soon, Jivan. Next bootcamp most probably in React. Sir, can I get the internship link, sir? इंटर्नशिप लिंक के लिए अब एक बार चले जाओ यहाँ पे CODEXINTERN apply for internship।
इंटर्नशिप लिंक। अमन प्रजापति नेक्स्ट क्लास नहीं है, यही लास्ट क्लास था। क्लास खत्म हो गया। ये इंटर्नशिप लिंक है। दिव्यांशु वर्मा, सही मन। सर मैं मेन अकाउंट से कमेंट नहीं कर पा रहा। कमेंट मतलब एक क्लास अबाउट। नहीं नहीं जीवन, फ्रंट एंड का क्लास मैं नहीं लूंगा। फ्रंट एंड का क्लास जो है वो राहुल सर लेगा। ओके, तो राहुल सर इज प्रोफेशनल इन फ्रंट एंड। ओके, हिज टीचिंग स्किल इज बेटर देन मी एक्चुअली। ओके, व्हेन कैन वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट बुक कैंप? ओके, ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। व्हेन वी विल गेट आउट लॉगिन क्रेडेंशियल? मैंने तो बोला ही था, एक हफ्ते एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट जब सेंड करूंगा तब भी वहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल। अच्छा, इंटर्नशिप की बात कर रहे हो आप रणवीर? इस मंथ के एंड तक मिल जाएगा। व्हेन राहुल सर टेक क्लासेस? लेगा तो पूछना पड़ेगा, तब लेगा। हाँ सही, ऐसे ही गाइड करूंगा। क्यों, मैं क्या अच्छा गाइड करता हूँ? इस वीडियो में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ 2 दिन से। देखना पड़ेगा क्या है, वो तो पता नहीं। तो थैंक यू स्वयं। ओके, 9, इट्स 9:40 गाइस। खाना वाना खाना है या नहीं? डिनर डिनर वगैरह भी तो करना है सबको। तो स्टीम यहीं पे एंड करे। सर कैन वी पोस्ट बुक सर्टिफिकेट इन लिंक्डइन? ऑफ कोर्स, Trushali. Please tag us. Please tag CODEXINTERN. We will love. Sir, let's call it a day. करना है अभी। Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you, everyone. Okay. And you will receive your certificate soon. Okay. Congratulations. You have completed the 3 days boot camp. इडली बनाया है सर, खाओगे? दिव्यांशु, हाँ भाई दे दो। इडली मुझे अच्छा लगता है। भेज दो यार। एड्रेस भेजू या मैं खुद आऊँ? थैंक यू। जिस जिसको इडली खाना है, ये दिव्यांशु से कांटेक्ट कर ले, जिस जिसको इडली खाना है। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। नाउ आई एम logging out, and if you have any other question, you can contact me. Okay guys, thank you everyone. Thank you for your time. You will receive your certificate soon. Thank you. Thank you. Now I'm signing off. Okay, bye, tada.